Hello, children. We start with the last topic of this chapter, the security as access and security aspects of OS. Now, security with respect to operating system here we'll be talking about. Security systems are those which will control through some specific security features. Okay, they will deal with the data that is stored or the data that has to be transported. So, what is the role of operating system in all this? So, this is the definition of security that we have written here. Security is concerned with the ability of the operating system to enforce over the storage and transportation of data in and between the objects that our operating system supports. So, the data is either stored or moves from one place to another in a network. So in both the cases, we would require our data to be secured. So we've seen this operating system managing all these process, memory, file, device, network, everything it has managed. One more thing that we have to see is that how does it manage the security? Now for security children, there are three main basic elements that we'll be talking about: confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality means what? That the data is confidential. So every person cannot have the authority to use that data. Not everyone should be able to view the system files. This is the confidentiality of the data. Integrity, it means what? We ensure that the information is not amended or deleted or modified or anything is done to the information. The information as it is has been given, has been stored by the operating system, has not been touched, has not been used to for their own concern. Any user which does not have any sufficient rights should be allowed to be should be allowed to modify the data. This is what we mean by the word integrity. Availability, that I, being an authorized user, should be made, should have the data available anytime and every time that I require, and it should not be available to any unauthorized person. So these are the three main elements of security that a user, that an operating system has to keep in mind. And all these can be breached. Breached means उनको ही तोड़ा जा सकता है. Breach of confidentiality होगा. That the unauthorized, this type of violation will involve what? Unauthorized reading of the data. You are not allowed to read the confidential file that is kept in the operating system, in the computer. If you're doing that, that is breach of confidentiality. So what are the methods an operating system is taking, that if I want this data to be confidential, what is it providing to me? It is providing that I should make it only read only, write only, or not able to read. Nobody unauthorized should be able to read. You can have breach of integrity, there can be unauthorized modifications, breach of availability, unauthorized destruction of data, then theft of service. Any use of resources can be unauthorized, can be used.
and denial of services. Any of the service which I should be given has been denied. So these are the security breaches that can happen. These are the threats that are there and how they are attacked. This is the information source and the information destination. This should be the normal flow. This is how my from the source the information should reach. The threat and the attack happens this. The attack on availability. I am not making the data available. From the information source, my data is not reaching to the destination. This is attack on availability. This kind of a threat is called as denial. When my information source has been given to a third party also, and of course it reaches the destination also. This is attack on confidentiality, that this was confidential, it was not supposed to be read or seen or given to anybody, but it has been. This kind of an attack, a threat, is called as tapping or disclosure. The next is integrity, that when the information source goes to the third party, from the third party comes to the destination source, that means there has been some modifications, something has been done to the original information source. This is attack on integrity, and this is called as amendment. Or also can be fabricated. This is attack on authenticity, that whether actually my data which I want is the correct data that I want, और हैज इट बीन फैब्रिकेटेड. फैब्रिकेटेड मतलब उसमें और भी दो चार बातें अगर मैंने लगा दी हैं, बोल दी हैं, दो चार और चीजें डाल दी हैं, दैट इज नॉट ऑथेंटिक डेटा. ऑथेंटिक मीन्स करेक्ट डेटा. तो फैब्रिकेशन इज द fourth threat that I can be given. So out of these, tapping and disclosure are categorized as passive threats. पैसिव क्यों है? बिकॉज ये थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं. ठीक है. और ऑथेंटिसिटी हमारी, फैब्रिकेशन भी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी पैसिव थ्रेट. बट जहां हमारा डिनायल हो रहा है, जहां हमारी अमेंडमेंट हो रहा है, दे आर कॉल्ड एज एक्टिव थ्रेट्स. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, दैट वाज द थ्रेट दैट आई कैन हैव टू माय सिक्योरिटी. उस सिक्योरिटी पे वैसे वैसे अटैक हो सकते हैं, उनको हम उस तरह के थ्रेट मानते हैं. बट एक्चुअली में जो अटैक करना है सिक्योरिटी को, व्हाट आर द वेज इन विच आई कैन अटैक? वन इज, उसकी ऑथेंटिकेशन पे ही मैं अगर क्वेश्चन मार्क डाल दूं तो. ऑथेंटिकेशन मीन्स व्हाट? वेरिफिकेशन ऑफ द एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज. मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया है, वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है. आई नो माई कंप्यूटर्स पासवर्ड. ही सेज यू आर एन ऑथेंटिक यूजर, यू आर अलाउड टू यूज द कंप्यूटर. मैंने पासवर्ड डाल दिया. अब उस पासवर्ड को किसी ने मेरे टाइप करते करते अगर देख लिया है और या रीड कर लिया है फ्रॉम द कीबोर्ड, दैट विल बी स्टीलिंग ऑफ द पासवर्ड. ठीक है. वो एक इंट्रूडर हो जाएगा. इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन होता है? जो अनवांटेड घुस जाता है कहीं उस जगह पे जहां पे उसको परमिशन नहीं है. सो यू कैन अटैक विद द हेल्प ऑफ दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, कि जहां आपसे कंप्यूटर कोई पासवर्ड मांग रहा है, आपने किसी का स्टील किया हुआ है पासवर्ड, आप पासवर्ड डाल के रख रहे हो, आप ऑथेंटिक यूजर बन गए हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट द ऑथेंटिक यूजर. ठीक है.
Second method is browsing. हम लोग browsing करते करते we sometimes reach to certain files which we should not be viewing. वो हमारे मतलब की फाइल्स नहीं होती हैं, but still we go through those files. That is again attack to the security. Third is trapdoors. Now, children, trapdoors are those kinds of entry points which some engineers, some software engineers जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो कुछ ऐसी एंट्री पॉइंट्स छोड़ देते हैं कि बाय चांस अगर हमें वापस प्रोग्राम में अंदर घुसना हुआ तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंटर द प्रोग्राम थ्रू दिस एंट्री पॉइंट विच इज माइंडेड सीक्रेट. ठीक है, वो सीक्रेट है सबके लिए, इट्स नॉट दैट ओपन. बट इफ आई trap that kind of an entry point, that is called as a trap door. You know, in uh, the previous era, पुराने ज़माने में what happens was that the Raja had a महल. He also used to create some tunnels to come out of the महल. There were certain secret uh, ways to come out of the महल other than the main entrance also, which only the certain people knew, maybe a Raja or his chief. So these are the trap doors. When we trap these entry points, when the people who want to breach the security, when they trap these entry points, this attack is called as trap door. Then electric data capture, children. As I said, through wires, my data can be stolen. Active passive हो सकता है. I can steal it through wiring. I can steal it through screen radiation. How is it this exactly happens? I have no idea. But there is something called as electric data capture. Then line trapping. Again, communication line को कोई चुरा रहा है हमारी, तो line trapping हो रही है हमारी. ठीक है. Waste recovery. From the recycle bin there can be some deleted files which can be useful, एंड बाई चांस डिलीट हो गई हैं, वहां से कोई फाइल्स उठा के आप उस फाइल में से आप कोई डेटा अगर यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी. एंड देन वी हैव राउज सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच इज मैलिक्यूस, जो हमारे को हमारे डेटा को परेशान करेगा. इट विल नॉट हेल्प अस वर्क प्रॉपरली, अटैक करेगा हमारे सिस्टम पे. एंड such programs are called as virus and worms. So next we'll study about virus. The full form of virus, children, is vital information resources under siege. Vital is important. Important information जो resources होते हैं हमारे, उनको हम अगर अपने कब्जे में ले ले, that kind of a program, it's a software, children, that kind of a program is called as virus. So it's a program that alters the way a computer works without permission of the user. Obviously यूजर की परमिशन नहीं है, क्योंकि हम वो प्रोग्राम ऑल्टर कर रहा है कंप्यूटर को. ठीक है, बट टिपिकली सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग. तो ये जो चीजें कर रहा है वो वायरस, जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कर रहा है वो वायरस है. और वायरस नुकसान के लिए ही बनाया गया है. ठीक है, इट विल नॉट हेल्प एनीबडी. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हमारे वायरस के? योर प्रोग्राम्स आर टेकिंग वेरी लॉन्ग टू गेट लोडेड. दीज आर वेरी जनरल सिम्टम्स आई एम टेलिंग यू. जो आपके प्रोग्राम साइज है वो चेंज हो रहा है. द प्रोग्राम साइज कीप्स चेंजिंग. कभी वो कितना जीबी दिखा रहा है, कभी कितना जीबी दिखा रहा है. दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. आपकी जो ड्राइव लाइट है, दैट कीप्स ऑन फ्लैशिंग व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, इवन देन दैट ड्राइव लाइट कीप्स फ्लैशिंग.
or the mouse keeps blinking, you know that there is something unwanted in the computer. एंड यूजर क्रिएट, हमने जो फाइल्स क्रिएट की हैं उनके अलग से ही कुछ नाम बन गए हैं, स्ट्रेंज नेम्स बन गए हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कंप्यूटर डज नॉट रिमेंबर योर सीमॉस सेटिंग्स. जो आपकी मेन बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो कंप्यूटर को याद नहीं रह रही हैं, वो बारी बारी चेंज हो रही हैं. सो आउट ऑफ ऑल दीज, एनी ऑफ द सिम्टम्स ऑल्सो अगर आप देख रहे हैं अपने कंप्यूटर में, दैट मीन्स दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर. तो वो किस तरह के हो सकते हैं? यू कैन हैव टाइप्स ऑफ वायरस: बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, मैक्रो, मल्टीपार्टेड पॉलीमॉर्फिक वायरस. जनरल पर्पस बोलते हैं हम इनको, वायरस को. ठीक है, तो लेट अस सी द मेमोरी रेजिडेंट वायरस पहले देख लेते हैं. जो वायरस मेमोरी में रहता है, दैट वायरस इज कॉल्ड एज मेमोरी रेजिडेंट वायरस. वेरी सिंपल. जो अपने आप को मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में अपने आप को जगह दे देता है अपने आप से, दैट वायरस इज कॉल्ड एज मेमोरी वायरस, रेजिडेंट वायरस. वो अपने आप को रैम में हाइड करके रखता है, सिस्टम मेमोरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है. स्लोली स्लोली, इट कंट्रोल्स द कंप्लीट सिस्टम ऑफ द कंप्लीट मेमोरी ऑफ द सिस्टम. एंड ऑब्वियसली द फाइल्स दैट यू हैव ओपनड, क्लोज्ड, कॉपीड, रीनेम्ड, उनको वो टारगेट करेगा, उनको करप्ट करेगा. ठीक है. Then boot sector virus. Children, in operating system, when the operating system loads its files, operating system अपनी जब files load करता है, that means the process is booting. Booting means startup हो रहा है हमारा computer. So when the virus, when it sits in that particular sector of boot, start होने के sector में जब बैठ जाता है, अपने आप को वहां बिठा लेता है, that type of virus is called as boot sector virus. ठीक है. और द ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट इज कि आप बूटिंग के लिए कोई भी डिस्क, एक्सटर्नल डिस्क का यूज नहीं करें. ओनली देन दिस वायरस विल नॉट बी अफेक्टेड. दिस वाज यूजुअली जब हम फ्लॉपी डिस्क से कभी कभी वी यूज्ड टू गेट द कंप्यूटर स्टार्टेड, these viruses were usually prevalent then. Then we have this directory virus, which is also called as a file virus. यूजली आपकी .exe और .com फाइल्स को ये इन्फेक्ट करता है. .exe मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, .com मींस कमांड फाइल्स. उन्हीं फाइल्स को ये यूजली अफेक्ट करता है. सो यू कैन सी दैट इफ योर .exe एंड .com फाइल्स आर गेटिंग अफेक्टेड, तो आपके सिस्टम में वर्किंग में कितना डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. देन पॉलीमॉर्फिक, पॉली मींस मेनी. तो ये डिफरेंट वेज में अपने आप को इनक्रिप्ट और कोड करके रखता है. And there are large copies of these viruses that are created. It is very difficult to find, to keep the track of these viruses, because different ways में अपने आप को encrypt या code करके रखता है ये. Multipartite virus, multi means many. ठीक है. तो multiple ways में आपको spread करता है ये virus. किसी फाइल में इंस्टॉल कर लेता है अपने आप को, किसी में अपने आप को बिठा लेता है. सो इट sometimes gets installed and sometimes it is shown in some presence is there in certain files. Now obviously if virus है हमारे कंप्यूटर में, तो it's a program that is going to replicate, it is going to copy itself, it is going to take the memory, यूज करेगा आपकी मेमोरी अननेसेसरली, विच शुड बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस. करप्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है आपके डेटा को. It is allowing somebody else to use your computer. So all these are the threats that my system security is going to have because of the virus. This is for the information. The first PC virus is called Brain A, created by these people.
and this year 1986. Now, how can a virus infect? It can infect in by inserting itself with the other code, by deleting some important code, by replacing the code with its own code, और by appending itself, अपने आप को एक कोड के साथ ऐड कर लेता है, ठीक है, appends itself to the unaffected program, or redirect itself, normal control flow of the program को change करके कहीं भी दूसरी वे में लेके चला जाता है. That is, these are the methods: appending, replacing, insert, deleting, and redirect. This is one question, children, that usually comes. What are the different methods by which a virus can infect other programs? So these are the 5 ways that you have to mention and write down this explanation in front of them. Then you should, obviously, when you have virus, there has to be some steps to avoid virus, children. So virus detection, removal, or prevention philosophies you should learn. These are just simple, which we can apply. Don't open the email that you're not sure of. Don't use any drive without scanning. And always scan your PC with antivirus softwares. And of course, use antivirus softwares if your system is getting affected. And how to protect: open the email attachments only when you know the email, the person who sent the mail. Always keep a backup of the hard drive, because you never know whenever your file is going to be affected, and whenever anytime the drive can get crashed. और अगर आपको कोई slow performance, as I told you, these are one of the symptoms, abnormal symptoms कुछ दिख रहे हैं, immediately check your hard drives, उसका बैकअप लो और उसको इन्फेक्शन फ्री करने के लिए एंटीवायरस चलाओ. ठीक है. डिटेक्शन के लिए चिल्ड्रन, these are visual detection ways, but actually डिटेक्ट करने के लिए वो एक चेकसम फाइल बना के रखता है, और अगर कोई मिसमैच होता है उस फाइल में, then it says that the virus is there. Because there are some programs which are continuously residing in the memory and continuously monitoring the memory and the IO operations. Okay, because we said these are the abnormal behaviors that a computer might show. So operating system वो पकड़ता है वो behaviors. So we should also be very vigilant while we are working on the machine. Okay. Then 2 Rauj softwares we had said, children. One was virus and other is worm. Worm is also a kind of a program, but it is different from virus because ये network पे चलता है usually. Worm कब affect होगा? आप अगर फाइल शेयर कर रहे हैं, peer to peer में अगर फाइल शेयरिंग हो रही है, affect होगा. अगर एक फाइल ईमेल पे as an attachment sent हो रही है, possibility of getting affected by a worm. So worm usually works or spreads over network connections. Okay. They are mostly found in the multi-user systems as Unix environments, and it is not a complete program in itself, unlike a virus. Virus is a complete program in itself. वो एक जगह बैठ जाएगा और अपने एक प्रोग्राम की तरह वो चलेगा, बट वायरस ऐसा नहीं है, वो एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है. It requires a host program. So this is the differentiation between virus and a worm. It inserts file into a it inserts itself into a file, and it replicates because it's on a network. It relies on the user. It can use network to replicate. It deletes or modifies files. It usually does not. Virus is slower, worms are faster. And then the definition. One point here you can add is that a virus and a worm, a virus is a complete program in itself. It's a part of the program.
sorry, a computer virus is not a complete program but a part of the program, and a worm is a complete program. ठीक है? Okay children, thank you.